Hello and welcome back to my channel again. And as we continue discussing stocks as asked first, ask your stock. Now for the next list of stocks, again we are going in alphabetical order. We're starting with the derivative ones. We've covered the first five. Now we do the next five. And still, in case you have still not joined the Telegram channel, please do that and don't forget to like and share this video. So let's go once again. So again with Gaurav. Welcome back, Gaurav, again for this one. HDFC Bank. What's your data telling you on HDFC Bank? HDFC Bank, everyone's favorite these days. Oh, this is so the Friday's move is bull, and it has seen 1400 and 1420 levels have seen massive call unwinding. Okay, and we are seeing put writers coming from 440 till 1380. So I think this range of 1380 to 440 will act as a support. The stock should scale at least 1500, 1480, 1500 with if it stays above 1400. So 1400 will act as a support, and if it maintains to do so, we'll see a move towards 1500, 1480 to 1500. That's what Friday's data and the accumulated open interest data is suggesting to. Okay. तो मतलब ये अभी भी रुकने नहीं वाला है, ये नॉन स्टॉप भागने वाला है, इसमें कोई पॉज नहीं है. ये जो फ्राइडे को ये काइंड ऑफ हैंगिंग मैन टाइप दोजी टाइप माना बेरिश कैंडल बना, ये खाली पॉज है पूरा मूव में. कुछ फॉल्स माना मूव देके ऊपर ही निकलने का पूरा प्लानिंग इसका. चार्ट्स भी वही बता रहे हैं नो कि ये 1480 1500 तक तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है नो, लाइक नथिंग कैन स्टॉप दिस काइंड ऑफ मूव, ऐसा लग रहा है यहाँ तक 1480 90. और इन केस उसके ऊपर भी निकल गया तो ये जो 14 just let me write it here for so this level of 1500 1480 is something to be watched out for. And in case it pushes its way above that, then these gap zones, this gap out here and this gap out here will be a target for me. I would be looking at that. That's at 1525, 1550 odd levels, like that. So basically, you're saying that if we are like right now, people who are bearish on Bank Nifty should also be careful, because this is one of the the biggest weight. It will require several other banks to negate the move if this starts pushing its way up. Bank Nifty won't stop then if this starts pushing its way up. So good one. Yeah, so data again tallies. यहाँ में भी सही जा रहा है हमारा data और chart reading. चलिए अच्छा बात है. Let's go back. But sir, 1400 is a crucial level. I think I will still. Yeah, वो है 1400 से थोड़ा सा वो है पूरा एकदम. Let's go. Next stock is sir IOC. Yeah, Indian Oil Corporation. Okay. So my reading इसमें ये आ रहा है कि ये मंथली में इसका अगर हम देखें तो काफी साइडवेज मूव हुआ था मंथली में, बट सॉलिड सपोर्ट है ये मंथली का. मतलब बहुत तगड़ा है यहाँ में फॉल्स ब्रेक डाउन देता है, वापस ऊपर चला जाता है. यहाँ हमने देखा एक बार 70, यहाँ में फिर वही देख रहे हैं कि बार बार इधर से घूमता है और वीकली में बहुत अच्छा सपोर्ट है. अनलेस ये ब्रेकडाउन 65 के बिलो करता है तब हम कहेंगे कि स्टॉक के लिए बहुत खराब है. बिलो 65 प्लंज मार दिया तो सीधा 55 चला जाएगा या उससे भी नीचे जा सकता है अगर गया. तो जब तक और अगर एकदम टाइट स्टॉप लॉस पकड़ना है तो 70 का पे पकड़ूंगा, 71 का स्टॉप लॉस एकदम टाइट स्टॉप लॉस. उसके नीचे हाँ वो 65 का क्रूशियल लेवल है. 65 नहीं टूटना चाहिए, 65 कैसे भी. और मेरे लिए तो 70 क्रूशियल है डेटा पे, क्योंकि फिर थोड़ा ये वीक हो जाएगा, मतलब वो एक फास्ट मूव नीचे की तरफ ले जाएगा. कैश के लिए वो एक्चुअली इसमें मूव क्रूड को लेके ज्यादा चलता है ना. जो क्रूड करेगा वो इंडियन ऑयल पर इंस्टेंट इम्पैक्ट आ जाता है उसका. तो इसको अगर हम वैसे देखेंगे ना, अगर बिकॉज ये इसका मूव विल नॉट बी व्हाट निफ्टी का मूव होता है या इंडेक्स का मूव होता है, इसका मोर क्रूड लाइक मूव है. तो 71 इज वन लेवल, कीप एन आई ऑन. वो टूट गया तो 65, नहीं तो अपसाइड इसका जो मुझे चार्ट में समझ में आ रहा है इसमें कि 73 के ऊपर अगर रैग चलने लग गया 70
तो ये जितना भी ये साइडवेज मूव था ना, इसमें जितने शॉट्स है सबको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप करेगा ये ऑल द वे टू 80 से। पहले 76 पर एक पॉज मारेगा, 75 76, और फिर शार्प मूव फॉर 80 देगा है ना। यहाँ 76 पर जाके छोटा सा हल्का सा पॉज आ सकता है, और वो भी डिपेंड करता है कब करता है। सपोजिंग इफ इट डज इट टुमारो, कल ही मार देता है 73 स्पॉट के ऊपर, तब तो 76 पर भी वो रुकने का नाम नहीं लेगा, सीधा 80 मार देगा सीधा वो। my neck out here. हाँ, If it like it's just a analysis. I'm seeing 73 के ऊपर का move I'm seeing for sure here. हाँ, हाँ. And there is somebody who has gone and written in the money put, sir. मतलब that is very rare to see in the money put writing in stocks. Wow. Okay. So that's major confidence, or maybe कोई hedge trader है क्या कर रहा है, but writing. But I take it as a positive sign because it's absolutely. It's a nice building which is being set at 72. Because price is going up ना, अगर price was going down या price static होता और किसने लिखा तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है वो bearish है, but ये तो guts वाला आदमी है, मतलब ट्रेडर है बना। About 72 it is ready for direct 75, मतलब 72 क्रॉस किया तो 75 सेम डे आ सकता है। एंड एज यू हैव सेड कि 75 इज योर लेवल एज वेल फॉर 76 तक तो दिख ही रहा है, अगर 73 के ऊपर सस्टेन किया ना, दिस यू नो इफ यू लुक एट द चार्ट, ये इधर में एक बार रुका था तो आई वुड से यार ठीक है चलो यहाँ में एक बार पॉज मारेगा, बट इट हैड ऑलरेडी टेस्टेड दिस 76 ऑन 30th of June, सो एक बार तो टेस्ट मारा ही है उसको, तो इस बार का मूव कुड बी अप टू 80। यस, सो बट लेट इट गो अबव 73, लेट इट सस्टेन अबव 73, देन ओनली, नो रशिंग टू 73 spot. We need a close, we need to see it sustain above 73 spot for an hour or so minimum to take that push out for the up move. Is this absolutely next one is we have with us is Jindal Steel. Anything on Jindal? Anything you have? Yes, I'm just opening that. So Jindal for me is strong only above 400. Okay. Right, not right now, but I would still not be over bullish at 400. I will be more bullish if we are able to scale above 420. Right. What my like if you want to go get into momentum zone, but thoda bearish you can become after 400, and from there we can see how it takes it ahead. For me, the concern in Jindal Steel, short term, I'm not going to say about medium to long term, is this formation out here in Jindal Steel. This was a evening star doji in a monthly pattern. Yeah. Very not a good sign when a stock does something like this. And it gave a breakdown. So right now, what probably is happening in the case of Jindal is just a pullback. Probably a pullback happening. Such kind of things, you know, are a bit worrisome. Hopefully, it pushes its way up. For me, also the data is, but this is monthly, so this is not from a derivative data point of view. This would be someone looking at a much longer horizon point of view. Short term में अगर हम इसको देखेंगे भी तो वीकली का रेजिस्टेंस पर चिपक रहा है यहाँ में, वीकली एकदम मना 400 एंड लेवल के पास में, और मेरे लिए जब तक ये 395 के ऊपर सस्टेन करना नहीं करेगा तब तक मैं भी इसको टच नहीं करूंगा। इसको 395 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए आवर 1 घंटा 2 घंटा आवरली बेसिस में, तो मैं सोचूंगा हाँ ठीक है ये 425 440 तक पुश करेगा ये स्टॉक। बट अगर मुझे देखना हो अगर मेटल स्टॉक्स में, तो ये कंपेयर टू JSW, कंपेयर टू टाटा स्टील, इसका इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं रहा है। मे बी अभी मार्केट वैसा ही है कि जो नॉन परफॉर्मर है वो भी भाग रहे हैं, तो not a bearish signal at all in the derivative market. Bullish. Yes, bullishness में वो conviction missing है फिलहाल। Yes. इसमें bullish नहीं, conviction. And if you look at number, like if I'm seeing number of call writing versus put writing, call writers are still there holding their fort compared to put writers. So even if the market keeps on moving, the move in this will only accelerate above 400. उसके पहले नहीं। और नीचे सपोर्ट डेटा में मेरे को 380 के पास है, 380 अगर नहीं रुका तो फिर तो 365 भी जा सकता है। Yes, मतलब ये वही है। This will be the first
accidents if the market reverses or takes a dip from it. So Yeah, this yeah, yeah. looks like So maybe abhi filhal it is not in the trade zone, neither buy nor trade zone. sell. Uh, so we stay out of this one totally. Ekdam. Okay. The next one is actually it's M&M. yeah, we will do M&M. We missed out on actually one. We'll come back on that one later. We'll Okay. do M&M first. Yeah, M&M. M&M, in my thing, what M&M is doing now is what Yeah. Maruti did pre 2018. Okay. The run-up which Maruti gave, from $10,000 levels. 2012 to 2018, it was amazing. Every month someone was coming and giving a short view and it was eating away all the shots. And you can see that here also. Yeah. Again, you see the move. It's just amazing. Non-stop, non-stop. It's an exceptional auto stock right now. Just in a different war path, absolutely knowing. But short term, that is from a week or 2 weeks point of view, for a couple of days also, my fresh entry would be only above 1185, not before that. I want to see it sustain above Friday high. Yeah. Else, this structure would suggest a lower high and a retest of this level. So I want to see it sustain above 1185. And if it does that, so I don't have a short-term view in this. My view is very clear. If you get an hourly, 2 hourly close above 1185 इसमें, तो ये सीधा 1275, 1350 उस टाइप का स्टॉक है. 100-200 रुपया का आग बंद करके मूव देने वाला स्टॉक है ये. इसलिए But वो conditional by about सबसे 1200. इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑल टाइम हाई स्टॉक. तो ऑल टाइम हाई स्टॉक को तो गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है. कुछ भी हो जाए उसको रहने दो. वो जैसे चल रहा है चलने दो उसको. और दूसरा बात, अगर वो और पियर्स कर रहा है ऊपर तो 100-200 रुपया यूं ऐसे ही दे देगा ये स्टॉक. हाँ, योर डेटा. Yeah, sir, for me also 1200 के ऊपर ही है जो है, because बट सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि थोड़ा थोड़ा 1200 पे पुट राइटिंग बन रहा है. मतलब थर्सडे और फ्राइडे का डेटा कंपेयर कर रहे हैं. तो देयर इज समबडी ट्राइंग टू राइट द डेटा, राइट, समवन इज राइटिंग 1200 का पुट. स्टिल देयर इज सम ग्रीन शूट, बट इतना नहीं है कि मैं अभी जाके ट्रेड ले लूं. आई विल स्टिल वेट. आई विल वेट फॉर 1200 टू बी ब्रीच्ड, एंड वंस इट इज ब्रीच्ड देन we can see what that suggests. Yeah, because but our chart is giving the same view. So for all the viewers, please remember, in a in a market which is running like the way it's been running for the last 1 week, do not try to short a stock at its highs, especially 52 week highs. These stocks, let them take a dip, let them show a proper reversal condition confirmation, then try to short them. Otherwise, refrain from them. There are weaker stocks to hit. You need not touch these ones and those stuff. Plus, I would, if you ask me, I never short a stock which is at all-time high until and unless I see a reversal pattern coming in on daily charts or weekly charts. It's a sin shorting a 52-week high short stock and buying some stock which is going towards 52-week low. Look at this move now. Yes, auto stocks did see a correction last week. Tata Motors saw, Bajaj Auto saw their corrections, their dips and all that, but this one is in a different league. So इसे पंगा ही नहीं लेने का उस point of view से. You don't want to buy, different story. Trailing it, fantastic, but don't try to mess with it. Okay. So the last one for this section, Manappuram. Manappuram, my reading before we go to yours, this turn that we are seeing out here in the weekly happened from a bullish harmonic shark. Okay, this bullish harmonic shark out here has managed to give it a pushback, and compared to the other stocks, if you compare the other finance stocks, this is not done too much compared to what they did. So now I am looking at it something like, only if it can push its way above 105. If it manages to stay above 105, then yes, then it's going to surprise. It's going to surprise all the way to 130, 135, that kind of a move will come. Above 105. Till 105, I am not going to jump into this one so early at all. So it could be a bit of a caution, anything of that sort. And pullbacks right now, supports around 90 bucks. 90 zone is something which will again see buyers coming in right now. Here, bit of a caution here in this one.
because Same if you goes for me. compare the Bajaj twins, you compare HDFC, compare this one, no, it didn't do anything out of the ordinary at all. So I'll take it with that way. Yes, above 105, I'll jump into it Sorry. because it will see crazy kind of short curve at that level. After that. Yeah. So, sir, again, like, I don't know why like, all our stocks are matching our view, Yeah. including the derivative technical view. Yeah. So, I see massive resistance at 100. I see resistance at 102.5 and Yeah. 105. So, these three zones are a big what do Yeah. you call it, resistance or a brick wall, as I call it in my posts Yeah. and all. Yeah. And So, 95 becomes crucial on the downside. So, for me, it's a no trade zone stock again. Above 102.5, my alert starts, and above 105, my buy view changes. Like my view changes to buy here. So okay. I second you on that. So Uh, 105 is an important level, and we'll go with that. So we could have a scenario out here, now, because the overall trend, short-term trend right now is extremely bullish. Right now, there's hardly any bearish thing on the screen. So these kinds of stocks, earnings are due. Suddenly, you might see a gap up kind of move, coming out of it. Such kinds of resistance, we saw it in Nifty at 16,400, at 16,800, and in several stocks, Kotak Bank and the ICICI Bank, they tend to break these walls after a period of consolidation with a gap up. Yeah. So definitely not a bearish signal, but no jumping into it, presuming it will do a gap up, etc. We just wait for the confirmation, then we enter. See, this is the gap down out here. This gap down window 103 to 100 and to 97, little bit penetrate into it. So this 103, 105 is a थोड़ा सा दर्दनाक जगह है एकदम, माना ये निकाल दे ऊपर की तरफ तो हम सोच सकते हैं हाँ अब तगड़ा मूव आएगा, इसमें ऊपर भागेगा 125-30 की तरफ. ये जो जोन है ना, ये जो ब्रेकआउट जोन ब्रेकडाउन हुआ ना, अगर ये 105-10 के ऊपर जब सस्टेन करने लग जाएगा तो ये 125 और ये 145 तक भाग सकता है. ये कुछ नहीं रोकेगा उसको फिर ऊपर की तरफ. फिर तो बस पेशेंस चाहिए, वेट करना है एंट्री के लिए, उसके पहले नहीं टूटना है उसको एकदम. मतलब जो मेरा ट्रेडिंग है, by chance if the market reverses, this for me is like one of the first accident candidate again. मतलब ये जल्दी गिरने वालों में से रहेंगे. और ये 95 तोड़ा तो ये फटाफट तोड़ा, गिरा भी तो वैसे है ना, देखो नॉन स्टॉप, जब गिरता भी है तो वैसे ही गिरता है, नॉन स्टॉप. सो मे बी इट्स प्रिपेयरिंग for the next dump, you never know, but we don't consider it a buy right now, only not a sell. For a sell also अभी वो zone नहीं है, because extremely oversold zone से वो भी bullish harmonic reversal है. तो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है फिलहाल, इसका कंसोलिडेशन हो रहा है. कंसोलिडेशन का टाइप में ऐसे ही होता है, वो काफी टाइम यहाँ में बोर करेगा, फिर सडनली शूट मार देगा. तो उसको पहले नहीं, उसने कुछ नहीं करना है, जस्ट सिग्नल ब्रेकडाउन का देगा तो शॉर्ट करेंगे, करेंगे, नहीं तो इसको जैसा चल रहा है तो अभी फिलहाल इसको वैसे ही रखेंगे, अलर्ट लगा के छोड़ दो. Again, no trade zone stock, I think. No more trader. Not very convincing. So with that, we wind up this particular round. We are coming back with the next round with you all. Stay tuned. Okay. Thank you.